ओके, फिज़िकल हो या वर्चुअल हो, कहानी एक ही है। चलो ठीक है, एनीवेज पहले देखते हैं कि कैसे गूगल शीट के क्या क्या कॉलम्स हैं, क्या मेन्यूज़ हैं, राइट। Starting from the top left, when we see, we have a typical style of menu where we have file, edit, view, insert, format, data, tools, extension, ये सब है. We'll look into each one of them. Just when you click on file, you have some option like new spreadsheet or open a new open a existing spreadsheet. You can import Excel data, you can make a copy of the same sheet, you can share. This is one thing that is amazing, you can share it with your participants. So let's say I am sharing it with someone. I'll click on share button. I will add the name of the person with whom I want to share here. Share this file for editing. Okay. Now here you can give the rights, like what do you want them to do. Do you want them to be an editor, a commenter, or just a viewer of the same? One second. I want to give them an editor, right? I'll click on send. So here I have a notification. Thank you, share this file for editing. So I'll click on open. Now see one thing, if I click on any of the cell and I come to this part, one second. See here it is automatically highlighted that Gaurav Agarwal or myself, the other ID, is using this sheet and I am on this cell at this moment. Okay. The same thing will happen on the other part, जहाँ पे ये मेरे आईडी से है तो यहाँ मुझे पता चल रहा है कि eCube Academia is on this cell. Now what about cell? This cell has references. What references? It has a column and you can see on this part it is written C2. So where C represents the column number and 2 represents the row number. So every cell in Excel or in sheet, Google Sheet, will have a reference of row, column cross row. At first the row column comes and then the row. Okay, that's one thing. So that is how you can collaborate. You can do a real-time chat also. You will have option here. One second. You have an option here to have a real-time chat and comment. So if I say hello, edit the formula in sheet 2. If I am writing it on this side, I will have an 100 message on the other side. Hello, edit the formula in sheet 2. Got it? If it is a yes, give me a yes in the chat. If you are clear about how to share your document and get real-time editing with your team. Guys, is it clear? Right. Anyways, so you can also leave a comment for someone to view. Here you have comment option. So you want to comment on all sheet or you want to give a comment on this particular sheet. मतलब एक Google sheet के अंदर, Google spreadsheet के अंदर you will have multiple sheets. These are the sheet in the down bottom. So you want to give a comment on this particular sheet or all the sheets, that depends on you. You write a comment. So this is a demo class. So here is a comment. So you know exactly with this little arrow you can see over here. यहाँ पे ये छोटा सा एक तो येलो है ना डॉट, इससे पता चल रहा है कि दिस सेल देयर इज अ कमेंट इन दिस सेल. ओके, ठीक है.
Now let us get into some functions and formulas. Before going into that, many times what will happen, you will be working with a lot of data. So let me take this for example. और यहाँ पे अगर हम बड़ा सिंपल है, देखो हाँ, आई वॉन्ट दीज नंबर्स टू, मतलब आई डोंट हैव टू मैनुअली टाइप 3 4 5 6 7 8 9 10. तो बेस्ट क्या है, आई विल जस्ट press on this. You see a small dot here, square dot on this side. You click on this and keep dragging. You will have your numbers. Clear? कैसे करते हैं? जैसे I want to take it even more further, then I will click on this and drag it to the required numbers. ठीक है? That's simple. अच्छा, अब बात ये कर रहे हैं कि लेट अस टेक एन एग्जांपल कि वी आर वर्किंग विद लॉट ऑफ डेटा. सो आई एम प्रेजेंटली एट दिस सेल नंबर 88 और row number 88. I don't know what this column signifies, what this column title is, what this column title is. Don't know anything about it. So what I will do now, I will freeze these columns. Anything above this part, I will freeze it. So how do I freeze it? There are two methods to do it. Number one, the easiest one is, you see a thick line over here, you can drag this line up to this part. So now when you scroll, see up to cell number 5, up to row number 5, everything is fixed. That is not changing. You are getting me? Similarly, if I had to lock this column, when I scroll towards the right, I don't want this column to be scrolled while I scroll. So I will drag this thick line to column A and see, it is there. It will not move. Clear? And what is the other method? Go to view, under view, because this is something that we are trying to view a different this is something that is more related to viewing of your sheet, no? So go to the view column, come to freeze. Now it is asking what do you want to freeze. I want to freeze up to row number 5. Up to row number 5. These are rows, the horizontals are rows. So I want to freeze up to row number 5. So that is freezed. Okay? That's the other method. Got it? इतना तक क्लियर हुआ? Is it clear till here? Any doubts? Hello. Anyways, so we'll move to the next one. Excel, whatever we do na, functions and formulas, they are the key component of Excel. Whether it is MS Excel or Google Sheet, whatever it is, the entire sheet is operated, or we work a lot using formulas and function. So let us start with formulas and function, and what exactly is the difference between a formula and a function. See, let us assume that I have to, these are the numbers and I have to add these numbers. So what I will do, in Excel, every formula or every function starts with a is equal to sign. So I'll press an is equal to sign. Now I want to add these all things. I will click on this cell. I will use my keyboard to put a plus sign. Then I will choose this cell, again a plus, this cell, again a plus, this cell, again a plus sign, this cell, again a plus sign, and this cell, and again.
after clicking on all the cell I will press enter. So this will give me the sum of all the desired cells. Now there is a challenge with this formula. When the data are small, this can be done, and this is a formula. Formula में क्या है बोलो तो basic only mathematical operators are used. In any formula in Excel, how do you identify if it is a formula or function? So in any formula now you will see that only mathematical operators are used. Like in this case we just used, when I double click on this I will see what is the formula. I have just used b3 plus b4 plus b5 plus b6 plus b7 plus b8. लेकिन वहीं if there is a predefined function in the Excel, मतलब you just have to, that is already being set to perform a certain type of arithmetic operation. Let us say for this same thing, if I use a formula, if I use a function, I type is equal to, then I type sum. So this is the list of all the functions that are already preset in Google Sheet and Excel. It is almost like there are 450 500 such formulas being already available. So I will just click on this once. Now if you press on this question mark, you will be understanding what is that formula made up of. So if I press on this, what is asking, you type the value 1. Value 1 is what? The cell. Which cells you want to add. So let's say I want to add this. I will press a comma and keep clicking on the cell. So that will be one method. This will be one method of doing a sum. The other method would be to directly type sum, click on the first cell, drag it till the place you want the sum to be done. What I have done, I clicked on the first cell of which from means the starting number, and then I dragged it towards the bottom to have a entire array selected. क्या बोलते हैं इसको? Array बोलते हैं. This is the entire array is getting selected, and the array is written as starting from b3, then double dot and up to b8. If I close the bracket, press enter, I will get the same result. So this is using a function, and the upper one, the first one, was using a formula. Is it clear guys? यहाँ तक clear है? Basic difference between sum means formula and a function. Why no one is replying in the chat? Thank you Kushi. Now let us look at some other functions. अब जैसे average निकालना है, we know how to find average. We take a sum of all the numbers, average निकालना रहता है ना. तो मान लो 5 सब्जेक्ट है, तो we take the sum of all the numbers and divide it by the total number of subjects. अब इसमें देखते हैं कैसे होगा. जैसे यहाँ पे इस जगह पे वी हैव यूज्ड अ फार्मूला b3 plus b4 plus b5 b6 b7 b8. This entire is divided by 6. And how the formula is written, let's say if I would have not put up this brackets, what would have happened? You see what has happened. If you remember BODMAS rule में क्या होता था? पहले ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन ये होता था ना. ये होता था. अब इस केस में जब मैंने फार्मूला को इस तरीके से लिखा हुआ है, तो यहाँ कोई ब्रैकेट्स तो है नहीं, तो ब्रैकेट्स है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवीज़न है. तो डिवीज़न किस किस के बीच में है? b8 और b8 और 6 का बीच में डिवीज़न है. b8 कहाँ पे है? b8 हमारे पास 34 है. तो अगर मैं 34 को डिवाइड करता हूँ 6 से, आंसर क्या आता है? 5.6666 ये आता है आंसर. अब देखो ये वाले फॉर्मूले में हुआ क्या एक्चुअली, ये सारे नंबर्स b3 b4 b5 b6 b7 ये सारे ऐड हो गए, और उसके बाद b8/6 क्या b8/6 ये ऐड हुआ है. मतलब ये सारे नंबर के ऐड हो जाने के बाद इसका डिवीज़न होकर जो आंसर है ना वो इसमें ऐड हुआ है. ये बात समझ में आ रहा है? अगर तो अभी इसको करेक्शन कैसे किया जाएगा? इसको करेक्शन करने के लिए वी विल नीड
ब्रैकेट्स हियर, ताकि पहले ऑल द एडिशन should get completed, and to the result we are dividing it by 6, so that gives me 31.5. So that becomes one example of how to get an average. Let us look at one more example where here we can see the numbers are less, 1 2 3 4 5 6, so it was easy for us to write this entire divided by 6, but many times it will not be possible to get the exact number of data. What we will do that time, we can use one more formula. These are just improvisation of formula. What is the formula? We have added all the number b3 b4 b5 b6 b7 b8, and now I don't know how many numbers are there, how many numbers are here, so I am using a function called as count function. Count function क्या करता है, देखो, I will use the function count, इस गल टू डालते ही फंक्शन आ जाएगा, and what it is asking, what do you want to count? I want to count how many numbers are there, so I will click on this entire array, select it, close the bracket and press enter, so it will give me the number. Okay, so total number of count of data here is 6. So what I have done, I just improvised the formula, I added all of them and then divided by count of these all cell. That's one thing. Then in Excel and Google spreadsheet you will have one simple formula to find average. इतना सब करने का ज़रूरत नहीं है. Why we are doing this is to learn more about, many a times you will not have a predefined formula for it, so if you know the basics you can design your own formula. Now you have one thing which is called as average, the direct formula which you can put directly, AVERAGE, average. Now average, what do you want to take the average of? I want to take a find average of all these numbers. So just click and select this entire set, press enter, you will find the average in front of you. Now count has one more function which is called as countif. नाम से क्या पता चल रहा है कि countif क्या होगा, कि there is a condition कि you have to count certain cells which specify a condition, which let us say an example, I want to count only the number of cells in which the number is greater than 30. इस 6 सेल में से I only want to count the numbers in which the cells in which the numbers is greater than 30. So what I will use countif. I will take a range first. Is equal to countif. I have to select the range. Now what is the condition? ओके, काउंटिफ के बारे में थोड़ा देर में आते हैं, पहले लॉजिकल टेस्ट समझते हैं. लॉजिकल टेस्ट क्या है? एक्चुअली ये एक लॉजिकल टेस्ट है. काउंटिफ, आई एम काउंटिंग दिस ऑल बेस्ड ऑन लॉजिकल टेस्ट. इफ these numbers are greater than 30, count only if the cell has numbers that is greater than 30. Sorry, one second. समझ में आया फॉर्मूला? count if in between the cell number B3 to B8, if there are numbers that are greater than 30, only count them. So this is not greater than 30, this is not greater than 30, this is greater than 30, greater than 30, greater than 30 and greater than 30. So these 4 numbers are greater than 30, so it has given me a number or the number of cells in which the value is greater than 30. अब इतना दूर क्लियर है आपको guys? Clear till here? Basic difference between functions and formulas. We looked at 3 formulas here. Sum, a very simple formula, sum. We spoke about count. We had also seen countif. Countif is having a condition, means if there is a logical test that is getting verified, only then the cells will be counted. We looked at average. These all things we have done. Moving to the next part, let us understand what is cell reference. अब किसी भी फॉर्मूला में, यहाँ पहले भी हम लोग देखें, अगर किसी भी फॉर्मूला में we had B3, B4, these as cell reference. Now
cell reference can be of three types. This type of cell reference, in which you just type the name of the cell, is called as a relative cell reference. अब इससे क्या मतलब है, एक एग्जांपल देखते हैं, समझ में आएगा. Let us take this example where we have numbers called 2, 4, 5 and 8, and these are the multiplier 10, 20, 30 and 40. So if I have to multiply these two numbers, what I will do, I will put an is equal to the result I wanted here. So I will put an is equal to sign. I will use my arrow keys to go to the cell, that is A8. Then I will use a multiplication sign and then select the cell number B8. I'll press enter. So this gave me a multiplication of 10 into 2. Now if I have to do the same thing here, same thing here and same thing here, I do not have to write the formula again. What I can simply do is I can simply click on this and drag till here. एक तो ये method हो गया. I will click on this and drag, so that is one method. The other method is double clicking on this. What is the other method? I am just double clicking on this, so again the formula is pasted in all this cell. Or I can do one more thing, I can press Ctrl C and Ctrl V. Even doing that will paste the formula. Now if I get into this formula and try to see what it has multiplied, you will find that it has multiplied A9 and B9. क्या multiply किया है? A9 and B9. So this is what I was needing. It has done that. But for some cases what will happen, we will need a multiplier. We'll need a multiplier which is absolute. मतलब, yeah, we will need a cell reference which is absolute. उसका मतलब क्या है? I only want this to be multiplied by this. तो क्या होगा, अभी देखो, मान लीजिए यहाँ पे if I do this same thing that I did previously, I am multiplying this cell with this cell. So the first result is okay. So 2 into 1000 is okay. But when I drag it, now what is happening? Look at it. Look at the formula, what is happening. It is now multiplying A9 to B7. क्या हो रहा है? The original formula was this cell A8 and B6. But when I dragged to the next step, what has happened? It has come one step down in the row, and it has come one step down in the row number B, in the column number B. Row number A, column number A में भी एक step down आ गया, और column number B में भी it has come one step down. The same has happened to this. What it has happened? Again it has come one step down here, one step down here. So this is relative reference. Relative reference में क्या होता है कि based on this cell in which the formula is there, the other cells are getting changed. The formula of the cells are getting changed. Let us take, if I am looking at this part, so now 8 is multiplied by 20, but my need was I want all these numbers to be multiplied by just this number. I don't want them to be multiplied by this and this. So what I will do one small change. I want to lock B6. So what I will do, I will put a dollar sign in front of B. I'll put one more dollar sign in front of 6. तो इससे क्या हो जाएगा, whatever row or cell reference I have, if I am putting a dollar sign in front of it, it gets locked. In this case, what has happened, when I press a dollar in front of 1000 or B, dollar in front of B, it is locking this cell. This entire column is locked. When I am putting a dollar sign in front of 6, so it is locking this particular column, this particular row. तो अब क्या हो गया, दोनों रो और कॉलम फिक्स्ड हो गए. अब देखते हैं फॉर्मूला. Let us double click on it or drag it. Now you see, every time, is look at this formula part. Look at this formula part. Every time I go down, only the cell reference of A9 is relatively changing, but B6 is absolutely
constant. B6 is not changing. Is it clear till now? How do you lock a particular cell or particular row and column? इतना दूर समझ में आया? ठीक है guys, clear till here? एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड रिलेटिव रेफरेंस, ये दो बेसिक चीज़ समझ में आ गया आप लोग को? टेक फॉर एग्जांपल, यू हैव अ करेंसी कन्वर्टर हियर, मीन्स $, $2, और यहाँ पे सॉरी $1, टुडे इट इज़ वैल्यूड एज 74 रुपीज़ 30 पैसा, and you want all the, suppose you have a rate column here and the rate is in dollars, $5, $6, $7, $9, and you want INR rates. So what you will do, you will just multiply this dollar into this 74.5. Will do this. So once you do this, what is happening? For the first cell it is correct, but if I drag it, you see the next cell, what all, when once you double click on the cell now, you will know which all cells it has been referred. So it is correct that I want to multiply A15, but I don't want it to be multiplied with this. तो यहाँ गलती हो गया. What I have to do, I have to click on this formula, I have to correct this formula, I have to lock the column, I have to lock the row. Now if I double click on it or drag it, I will find the answers correct. ठीक है, तो मान लो अभी today the price is changed to 76 rupees. You will see these results getting changed. These results also will get changed accordingly, isn't it? Suppose it has changed to this, so these results will change. इसलिए we will need a absolute reference. Sometimes we need a mixed reference. We just want to lock the, you can see these two parts. In the first formula we have locked the row. In the second one we have locked the column. अब देखते हैं, जैसे इस एग्जाम्पल में we have locked this entire column we have locked. You can see the formula, but the row is open. So अभी होगा क्या, if I shift to the right, example, if I am shifting to the right, तो होना क्या चाहिए था, जैसे मैं राइट शिफ्ट करता तो ये भी एक स्टेप राइट आ जाना चाहिए था. जैसे एग्जांपल, अगर मैं इसको इस तरीके से अगर नहीं करता, मान लीजिए इफ़ आई वुड हैव नॉट डन दिस, आई वुड हैव जस्ट टेकन दिस A8 into A8 into C8 है ना. If I would have taken A8 into C8, अगर मैं and then I would have dragged on this side नीचे, और एक मैं यहाँ भी ड्रैग करता हूँ, एक बार देखो क्या होता है. ठीक है, जब मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूँ तो सेल्स, look at the formula part, A8 becomes A9, C8 becomes C9. When I am dragging to the right side, what is happening, A8 becomes B8. देखो अभी कौन कौन सा सेल हाईलाइट है, A8 हाईलाइटेड है, C8 हाईलाइटेड है. लेकिन when I click on this, what is getting highlighted, a one step towards right this is highlighted, a one step towards right this is highlighted. लेकिन हमको करना क्या था, I have to multiply this number with a, first I had multiplied this number with this number, now I want to multiply this number with this number. I want to fix this entire row. तब क्या करूँगा, तब I will do this. Like in this case I had locked the entire row, I had locked the entire row. वापस मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ. I want this to be multiplied by this, or let's say I multiplied by this 20. When I should drag on this side, it should get multiplied by 100. 2 must get multiplied by 100. That is my idea. So what I will do, I will lock A here
press enter, and then when I drag on this side, you see the column is locked, only the row which is the second part of the cell reference that is moving towards the right. ठीक है, अगर मैं और एक राइट लूँगा तो देखो वापस सेम चीज़ होगा, दिस इनटू दिस, देखो. So this is a mixed reference where we have one part of the cell fixed, or either the row or the column is fixed. That will make a mixed type of reference. Is it clear till here? Mixed reference, absolute reference and relative reference. Mixed, absolute and relative reference. We'll move to the next part, which is a logical test. Logical test क्या है? Logics. जैसे मान लीजिए अभी we have some numbers, number set A and number set B. Two numbers we have. Now I have to test it like which one, either A is equal to B or A is not equal to B. For these are the symbols or operators that we will be using in the formula. If A is greater than B, if A is greater than equal to B, लेस देन है या लेस देन इक्वल टू बी है, अगर ये टेस्ट मुझे करना है तब आई विल बी यूजिंग लॉजिकल टेस्ट फार्मूला, जो कि बड़ा सिंपल है. व्हाट आई विल डू, आई विल प्रेस एन इजगल टू, बिकॉज वेदर इट इज अ फार्मूला और फंक्शन एवरीथिंग स्टार्ट्स विद इजगल टू. इज दिस इज इक्वल टू दिस, कौन सा, इज 12 इक्वल टू 99. लेट मी प्रेस एंटर. सो यू गेट अ मैसेज कॉल्ड एज फॉल्स, क्योंकि ये दोनों इजगल टू है नहीं इसलिए ये फॉल्स आया. Now if I have to check whether this is not equal to this, what I will do again, I will do press this, then I will have a greater than, less than and greater than sign, and then I will use this this cell. You will find the answer is true. So these two are not equal to each other. Let us check if 12 is greater than 99. Same formula, 12. Now I will put greater than sign. I will use this. So again it is false. Let us see if 12 is greater than equal to 99. Again it is false. Let us check if 12 is less than 99. It says true. Is it greater than equal to 99? It will, sorry, less than equal to, sorry, less than equal to 99, it is 2. समझ में आया? तो अगर ये 12 और ये 12 देखते हैं अभी. लेट अस चेक फॉर इजगल टू. अच्छा, अगर मैं इजगल टू डाल के एंटर डालता हूँ ना, यहाँ पे देखो देयर इज़ अ प्रॉब्लम लिख रहा है. तो फिर अगर मैं इजगल टू डाल के कुछ यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर यहाँ इजगल टू कैसे ले गया, मतलब कैसे लिख पाए हम लोग. और एंड how come we could have written these things, how we could have written these formula, because once I press equal to and I don't type a formula or function, if I press enter it says there is a problem. So what I have to do, I have to first type a single apostrophe and then is equal to. तो इससे क्या होगा, it will consider it as a text and not a formula. Whatever I write here next, whatever I write here, it will consider it to be a text and not a formula. समझ में आया? तो यहाँ पे कहाँ गया, we were here. So let us check if this is equal to this. So I'll press is equal to this. Then again check if it is equal to the number in the B column. You see how it is giving you the logical answers. If it is true, it is true. If it is false, false. ठीक है? Got it? लॉजिकल टेस्ट. ये लॉजिकल टेस्ट क्यों बता रहा हूँ कि लॉजिकल टेस्ट जैसे हम लोग काउंटिफ में यूज़ किए थे एक लॉजिकल टेस्ट, रिमेंबर वी यूज्ड अ लॉजिकल टेस्ट हियर इन काउंटिफ. क्या लॉजिकल टेस्ट था? लॉजिकल टेस्ट ये था, क्या इफ एनी नंबर आउट ऑफ दिस इज ग्रेटर देन 30, सो गिव मी द आंसर. So it has done a logical test. Okay, so these 4 numbers are greater than 30. It has given us an answer 4. Right? यहाँ तक किसको डाउट है?
अब देख जितना भी फार्मूला वी हैव गॉन थ्रू, देर आर फ्यू थिंग्स अबाउट फार्मूलाज, लाइक इफ यू ब्रेक डाउन द फार्मूला you will find there are, you break down this formula you will find that it always starts with is equal to. So one thing is it will always starts with is equal to sign. Next what it is, they have cell references. क्या होता है, सेल रेफरेंसेस होते हैं, जैसे कि B3 B4 ये होता है. और क्या होता है, देयर आर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स. मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जैसे इनटू, डिवीज़न, प्लस, माइनस, दीज थिंग्स यू हैव मैथमेटिकल ऑपरेटर. और इट विल हैव अ फार्मूला, जैसे कि इस केस में यू विल हैव अ फार्मूला सम. So if you break down a particular function, you will find these all things are the components of a formula and function. ठीक है. So logical test has been done. Any doubts still here? Now let's get into if function. अब इफ फंक्शन का काम क्या है, सी इफ यू लुक एट द इफ फंक्शन, देयर इज, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ इफ फंक्शन विच सेज it will have a logical expression. Logical expression is what? Means there will be a logical test. जैसे कि यहाँ पे logical test थे ना सारे, there will be a logical test at first, comma, there will be a value for it to be true and value if it is false. मतलब क्या है, let us say if 22 is less than 34, so it will give you an answer true if this statement is true, and if it will give you an answer false if this statement is false. तो कैसे लिखना है ये देखते हैं. If we are using the method called the logical test method, we can just get true and false as answer. But if we want something like this, if we want कि अगर a greater than b है, then I will need an answer. अगर ये true है, if this statement is true, I need to type red, or I need an answer red. And if this statement is false, just for your understanding I am writing, I want an answer green. क्या टेस्ट है, अगर a greater than b है, if the number present in the column a is greater than b, then I want an answer red. If it is less than b, then I will write an answer false. तो कैसे लिखा जाएगा, if logical expression is what? Logical expression is if this cell is greater than the value of number in this cell, then I will press a comma. What I want an answer. If this is true, I want red, double inverted ends, again a comma. If it is not true, then I want an answer green. Clear? Let me press enter. क्या आया, ग्रीन आया, क्योंकि फॉल्स के लिए मैं क्या लिख रहा था, अगर फॉल्स है तो क्या आंसर आएगा, अगर ट्रू है तो क्या आंसर आएगा. सो आज दिस स्टेटमेंट वाज फॉल्स, आई गॉट दिस. नाउ लेट मी ड्रैग इट डाउन. ठीक है, गॉट द आंसर. Because 33 is greater than 12, I always wanted an answer. For this statement to be true, I wanted an answer red and green. Similarly, let us see if I want an answer for pass and fail. पास एंड फेल, लेकिन कंडीशन क्या है. अच्छा, एक काम करते हैं, कंडीशन चेंज करते हैं. लेट अस टेक वन मोर कंडीशन इन विच इफ बी इज ग्रेटर देन ए, इफ बी इज ग्रेटर देन ए, इस कंडीशन के लिए ट्रू और फॉल्स चाहिए. ठीक है, तो मैं वापस लेता हूँ यहाँ पे इज इक्वल टू इफ. लॉजिकल टेस्ट क्या है, लॉजिकल टेस्ट है इफ बी इज ग्रेटर देन ए, देन if it is true, give me pass, double inverted closes, and if it is not true, give me an answer fail. If I drag it down,
because it was an absolute cell reference, so it will give me the answer. सिर्फ लास्ट वाले केस में फेल हो रहा है, ठीक है. सो गॉट द आंसर. इफ फंक्शन कैसे काम करता है? इफ फंक्शन कैसे काम करता है? इज इट क्लियर टिल नाउ? Okay, let us look at one more function which is called as nested if. ठीक है, इस एग्जांपल को देखते हैं. यहाँ क्या क्राइटेरिया है? इफ अ स्टूडेंट इज लेस देन 40, if a student has scored less than 40, this is the test mark of Ayush, Ayam and Shruti. So if a student is less than 40, the answer should come false or fail. If it is more than 40, it should come pass. If it is more than 60, it should come distinction. अब if में क्या हो रहा था? If could have two output answer. Either it could have an answer for the statement if the logical expression is true, this answer will show up. If the logical expression is false, this answer will show up. So these were the two options. But now I am talking about three things. I am saying मुझे pass, fail और distinction ये तीन चीज़ चाहिए. तो then how I will do that? I get three answers, not two answers. I will be using a formula called nested if. Nested if कुछ नहीं, when we use an if condition inside an if condition. I'll give an example. See, you look at this formula. What I am saying, starting from the biggest, the largest verification. The largest verification was check if this number, if the number in this part is greater than 60, then give me an answer distinction. तो ये हो गया पहला कि if this statement is true, give me this answer. If this statement is not true, then go and check this if part. What it is saying, the formula is saying, if this statement is true, you give me this output. If this statement is not true, you should give me this output. Now, in this output, what I had done, I had put one more if, which says, okay, now if this answer is false, so you are going to check and come on this part. Now, in this part, what I am asking, if this answer is greater than 40, type pass. क्या है? अगर if this answer is greater than 40, then type pass, and if it is not greater than 40, type fail. ठीक है? किसको ये फॉर्मूला समझ में आया? हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस फॉर्मूला? या किसको और एक बार चाहिए बताओ, मैं वापस बताऊंगा. Nested if formula, an if inside if. When we have more than two conditions to check, that time we use nested if. Guys, no one is interacting, so what I would understand कि everything is understood or nothing is understood. क्या? नेस्टेड इफ फॉर्मूला कैसे लगता है? इज इट क्लियर? In this condition, the answer was, if it is greater than, is it greater than 60? 45. Is it is greater than 60? No, it is not greater than 60. So it will completely not recognize this part. It will come to this part, second part. In second part, it is asking, is it greater than 40? Okay, it is greater than 40. So if it is greater than 40, type pass. So it is writing pass. Now 65. First check क्या है कि is it greater than 60? Okay, so it is greater than 60. True. So the formula get terminated here. It is not getting into this part. The formula gets terminated between
if B6 is greater than 60 and distinction, it is not considering this part because the statement has become true. तो इसलिए यहाँ पे ये 65 लेके distinction it is shown to us. Done. Nested if. अब एक और कंडीशन होता, मान लो if I would have one more condition, if it is greater than 80, then I should have a function called as gold medalist, and let me put a number here 95 and let us check. What I will do is equal to, if P7 is greater than 80 comma double inverted starts, what I want to mention, I want to mention gold medalist. If it is false, then I have one more condition, then go and check if B7 is greater than 60, and if this is true, then give me an answer distinction. Got it? Okay, so let us say, अब यहाँ पे दो कंडीशन हो गया, एक तीसरा कंडीशन. अगेन आई विल प्रेस अ कॉमा. Okay, so this number is not greater than 60. What will happen? So I will have one more if. Now this time the if is saying, okay, now check if B7 is greater than 40. If it is greater than 40, you can say he has passed the examination. And now if it is below 40, I can clearly say he has failed in the examination. Now see what happens. If I press enter here, in Google Sheet, one benefit is, even if I had not closed these formulas, I had not closed this if, I didn't close this if, I didn't close this if, even if I have not closed the if, the Google has automatically corrected the formula and it has given me gold medalist. Otherwise, what would have happened? I would have to choose to close these three formulas and then pressed enter, so it will give me gold medalist. क्लियर हो गया कि कैसे करना है नेस्टेड इफ के अंदर इफ कैसे हुआ. क्लियर? Only Khushi and Sunanda, they are answering. The rest again, I don't know whether it is for attendance or what it is. Guys, you will need this in your future. Okay. Now let us check if each. अभी यहाँ पे कंडीशन क्या था? यहाँ पे कंडीशन था, here we had condition, if it is greater than this number, if it is less than this number, if it is greater than this number, so give me this answer. But now what happens? Now the condition is changed a bit. Now it is saying if the number is between 0 to 40, मतलब it will start, it is greater than equal to 0. क्या हो रहा है यहाँ पे कंडीशन? It is greater than equal to 0 if the number is greater than equal to 0, or it is लेस देन इक्वल टू 40. दो कंडीशन आ गया. तो अगर ऐसा कुछ कंडीशन है तो आई वांट फेल. मतलब इफ द नंबर फॉल्स इनटू दिस कंडीशन देन आई वांट फेल टू बी शोन इन द आंसर. इफ द नंबर फॉल्स अंडर, इफ द नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 बट इट इज लेस देन इक्वल टू 60, आई वांट द आंसर पास टू बी रिटन. Now the third point is, if the number is greater than equal to 60 and less than equal to 100, तब क्या आंसर चाहिए? मुझे चाहिए तब आंसर पास विथ डिस्टिंक्शन. तो इस तरीके से जब डबल कंडीशंस आ जाएगा, देन हाउ वी विल यूज द इफ फंक्शन. सो द इफ फंक्शन विल बी यूज्ड विद अ एंड फंक्शन. इफ फंक्शन किसके साथ यूज होगा? एंड फंक्शन के साथ यूज होगा. एंड फंक्शन विल बी यूज्ड टू चेक टू डिफरेंट पैरामीटर्स. क्या टू डिफरेंट पैरामीटर्स? अभी फॉर्मूला को थोड़ा देखेंगे तो समझ में आएगा. इफ फंक्शन कैसे काम करता था? इफ फंक्शन के लिए तीन चीज़ चाहिए. इफ फंक्शन के लिए तीन चीज़ चाहिए. पहले वो क्या पूछेगा? भाई लॉजिक क्या है.
पहले अपना लॉजिक बताओ, ठीक है। अगर लॉजिक ट्रू हो गया तो ये पहला आंसर आएगा, अगर लॉजिक फॉल्स हो गया तो ये कॉमा के बाद वाला दूसरा आंसर आएगा, ये था। अब एंड में क्या हो रहा है देखो, इजगल टू इफ, लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि द नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 40। इफ दिस इज ट्रू देन आई वांट एन आंसर फेल, if this statement is true then I want an answer fail. If this statement is not true then do the second checking. Second checking is what? Check if this number is greater than 40 and less than 60. Check if this number is greater than 40 and less than 60. Okay, so let me check that. So if it has checked and again it has failed, मान लो again ये यहाँ पे ये fail हो गया, again अगर ये यहाँ पे fail हो गया सेकंड स्टेज में, तो फिर थर्ड स्टेज में जाएगा। अगर पास हो जाता, मतलब इस स्टेज में अगर वो क्लियर हो जाता तो ट्रू हो जाता, तो फिर यहाँ पे पास आ जाता। अभी ये आप इस स्टेज में भी फेल हो गया, तो थर्ड स्टेज को जाएगा। चेक इफ इट इज़ ग्रेटर देन 60 बट लेस देन 100, तो पास विथ डिस्टिंक्शन। इफ इट इज़ नॉट फॉलिंग अंडर एनी ऑफ दिस कैटेगरीज, मतलब इट इज़ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 100, देन टाइप इनवैलिड एंट्री, खत्म। इफ फंक्शन का सारा चीज़ क्लोज हो गया। जैसे एग्जाम्पल, इफ आई टाइप हियर 105, function is already here, I will drag it, you see it is saying invalid entry because the number has crossed the limit. Let us take 40, failed because if it is less than equal to 40 तब भी हम लोग फेल ही कंसिडर कर रहे हैं। 41 पास, 65 पास विथ डिस्टिंक्शन, -30 invalid entry. Getting the point? गाइस, किस तरीके से इफ एंड फंक्शन को यूज़ किया जाता है, इफ एंड फंक्शन को। पहला लॉजिक चेक हुआ कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट के लिए आंसर ट्रू है। अभी वापस अगर बनाते हैं, ठीक है, लेट अस मेक इट हियर अगेन, यहीं पे बनाते हैं। इफ I will take the AND function, लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या है, एंड फंक्शन का भी हमें डिफाइन कर रहे हैं ना। लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या है, लॉजिकल एक्सप्रेशन ये है कि हमारा जो ये वैल्यू है ना, दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू 40। क्या है, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 40। इफ दिस इज ट्रू, इफ दिस इज ट्रू, तो आंसर किससे किसके बीच में आएगा, 0 से 40 के बीच में आएगा। 0 से 40 के बीच में आएगा तो हम लोग जानते हैं कि वो बंदा फेल हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये 0 से 40 के बीच में नहीं है तो क्या करेंगे, तो एक काम करो, वापस इफ फंक्शन लगाओ और चेक करो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्या भाई, क्या स्टेटमेंट, अच्छा, चेक इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कि दिस नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, greater than equal to 40 but this number is greater than equal to 40 but this number is less than equal to 65। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तब लिखो कि वो पास किया है। अगर ये स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं है देन अगेन आई हैव टू चेक वन मोर स्टेटमेंट, दैट इज check if this number, which number, this number is greater than equal to 65 but this number is less than equal to 100. If this statement is true, you can type pass with distinction or else comma type invalid input. I will close this one first. You can see it becomes highlighted when I am closing a function. ये वाला this
and this became highlighted. So next I have to close one more. This one is to be closed. Once I press again, so that is closed. Now the final one, all three are closed. When I press enter, so it says me it is he has failed. अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया पास विथ डिस्टिंक्शन में, यहाँ एक प्रॉब्लम आ गया. ऑल्दो okay, it has to be greater than equal to 60. One second. So if it is less than equal to 60, pass. If it is greater than equal to 60, then it is pass with distinction. ठीक है, done. Nested if. Again you can see this is if and again there is an if, so it is a using nested if and AND function. Nested if and AND function, these two functions we are using here. ठीक है. So some common errors we had already seen. Common errors जैसे मान लो अभी ये एग्जांपल देखते हैं. Every month government is giving 100 units of electricity free. Now your total consumption is 250 units. Your rate per unit is 10 rupees. So how you will calculate the total bill? You will go ahead and minus the total consumption minus the free electricity, and then you will go ahead and multiply the rate. So what is the idea? Okay, so 250 I had consumed. There is free 100 units, so 250 minus 100, that is 150, and 150 into 10, my answer should come 1500 rupees. But once I do this, my answer it is coming minus 750. Now why this has happened? Because of the BODMAS. पहले मल्टीप्लिकेशन आता है तो किस दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो गया? B2 और B4 के बीच में, मतलब 2000 नहीं 100 और 10, 100 और 10, B2 was 100, so 100 and 10 के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो गया, that becomes 100. B3 was 250, 250 minus 100 is minus 750. But the actual operation should have been, I should have started the operation with a bracket where I would have subtracted this with this, I would close the bracket, and the result must be multiplied by 10. Now this gives me the correct answer. So whenever you are using any logic or operations in Google Sheet, Excel, so keep in mind about the BODMAS rules. Guys, clear till here? Is it clear till here? Shall we move to the next one? Thanks, Chandni. All right. Moving to the next one, it is VLOOKUP. अब VLOOKUP फार्मूला का एक एक्चुअल यूज़ देखते हैं, उसका समझ में आएगा VLOOKUP का काम क्या है. जैसे मेनी अ टाइम व्हाट विल हैपन ना, यू विल हैव अ डेटा सेट, ये तो छोटा डेटा सेट है, यू विल हैव अ बिग डेटा सेट and you want all this information. Like for example, if I type this roll number, I want to know the name of the student, his father name and the contact number. These three things I would want to know. So if I type here, let's say this number, this is the roll number of the student, I want the student name and the father name to be shown here. और ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है VLOOKUP से. जैसे VLOOKUP का मतलब क्या है? वर्टिकल लुकअप. कैसे काम करता है, क्या है, वी विल जस्ट अंडरस्टैंड इन दिस क्वेश्चन. ठीक है, पहले VLOOKUP का फॉर्मूला देखते हैं. क्या है VLOOKUP का फॉर्मूला? पर्पस समझ में आया क्या है? बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर
value of a cell in a vertical column based on a particular value of a cell in the vertical column. These are vertical में कॉलम होता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द कॉलम से रिलेटेड और जो भी वैल्यूज़ है उसको अगर इफ दैट इज़ व्हाट वी वांट एज आंसर, देन वी कैन यूज़ वी लुकअप बेस्ड ऑन द कॉलम्स particular value we are getting an answer, like name of the student is Avinash, father name is Babbar. So this is what we call as a vertical lookup function. अब देखते हैं वर्टिकल लुकअप वी लुकअप का फॉर्मूला क्या है. वी लुकअप का फॉर्मूला क्या है कि यू हैव टू गिव द सर्च की. सर्च की क्या है? सर्च की इज दिस नंबर. आई वांट यू टू चेक दिस नंबर एंड वेयर यू वांट टू चेक, मतलब व्हाट यू वांट टू चेक, वेयर यू वांट टू चेक, and once you have checked that, which column you want the answer to come up. वापस बोलता हूँ. फर्स्ट क्या है? what you want to check. what you want to check में हम लोग को क्या चेक करना है कि भाई 20448 ये चेक करना है. where you want to check, I want to check it between A8 एंड D11. ये पूरे A8 और D11, A8 से लेके D11 के बीच में चेक करके बताओ क्या चेक करना है. A8 से लेके D11, याद रखो वी हैव टू टेक द एंटायर टेबल ना जिसमें डेटा है. सो A8 से लेके D11 तक मुझे चेक करके बताओ. अच्छा चेक कर लिए, यहाँ पे आ गया. इस पूरे टेबल में योर आंसर इज हियर, मतलब योर नंबर इज हियर. Now what do you want to display? What do you want to display? I want to display his name which is in the second column of my selection. My selection was A8 to D11. My selection was A8 to D11. What I want to display is this second column, the answer in the second column. Against 20448, what is the answer in this second column of the entire table that I had selected? I want that answer to be displayed. Got it? So what I want to display? I want to display the answer in the second column related to 20448. ठीक है, इतना दूर समझ में आ गया. If you have got this answer or you have understood this, now it becomes easier for you. देखो करते हैं. मान लो यहाँ पे मैं रोल नंबर चेकर डाला, रोल नंबर चेकर, यहाँ पे उसका नाम आना चाहिए, यहाँ फादर नेम आना चाहिए एंड देन यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर आना चाहिए. ठीक है, मैं रोल नंबर डालता हूँ 2, यहाँ पे एक रैंडम 10987 ये नंबर डाला. अब यहाँ पे क्या आना चाहिए था? यहाँ पे व्हाट आंसर वी आर एक्सपेक्टिंग, आवर एक्सपेक्टेशन इज़ कि अभिलाष यहाँ पे आंसर आए और नमन यहाँ पे आंसर आए और ये जो नंबर है ये नंबर यहाँ पे आ जाए. दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग. ठीक है, अब इसको फॉर्मूला के हिसाब से देखते हैं. इज इक्वल टू वी लुकअप व्हाट आई वांट टू लुकअप इज आई वांट टू लुकअप दिस वैल्यू. अब हर बार मैं जब इसको स्क्रॉल करूँगा, मान लो अभी ये फॉर्मूला लिखने का तो स्क्रॉल करूँगा, करके भी देखेंगे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, फिर आगे बात करेंगे. ठीक है, एक बार आई वांट टू लुकअप दिस वैल्यू. वेयर डू आई वांट टू लुकअप? आई वांट टू लुकअप इट इन दिस एरे या दिस टेबल. आई वांट टू लुकअप. हमेशा ध्यान रखना, वॉट एवर वैल्यू यू आर ट्राइंग टू लुकअप हियर मस्ट बी इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द एंटायर टेबल. अभी ऐसा नहीं हो सकता था कि यहाँ पे मैं नेम चेकर डालता और अक्षित डालता और ये टेबल को सिलेक्ट करता तो मुझे आंसर मिलता. वैसा होगा नहीं. विल लुक एट दैट एज वेल, क्या लिमिटेशन है विल लुकअप का. ठीक है, तो अभी क्या किए, वी वांट टू लुकअप दिस वैल्यू इन दिस टेबल. सो आई सिलेक्टेड द एंटायर टेबल एंड व्हाट आंसर आई वांट द आंसर टू कम अप फ्रॉम दिस कॉलम. और इस टेबल में दिस इज कॉलम इंडेक्स नंबर 2. दिस इज द कॉलम इंडेक्स नंबर 2 कॉमा. एंड व्हाट डू यू वांट टू हैव एन एग्जैक्ट मैच. एग्जैक्ट मैच मीन्स 10987 का ही तुमको आंसर चाहिए या उससे रिलेटेड कुछ मैच हो. 10987 तो उसका भी वो आंसर उठा ले. क्या चाहिए? नो, आई वांट एन एग्जैक्ट मैच. फॉर एग्जैक्ट मैच यू हैव टू टाइप 0
and then close. जब भी हम ऑलवेज ट्राई टू गेट एन एग्जैक्ट मैच, सो आई वांट एन एग्जैक्ट मैच, दैट इज व्हाई आई टाइप्ड 0, या यहाँ पे फॉल्स भी लिख सकते हो, यहाँ पे फॉल्स भी लिख सकते हो, तब भी अभिलाषी आएगा, बिकॉज 1 इज़ ट्रू एंड 0 इज़ फॉल्स. ठीक है. अच्छा, अब मैं क्या बता रहा था, हम लोग हमेशा पता है कि फॉर्मूला को अगर कॉपी करना है वी कैन ड्रैग इट, सो लेट मी ड्रैग इट. अब ड्रैग करने से ये इनवैलिड एंट्री आ रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नाउ इन सेकेंड टाइम इट इज़ सर्चिंग B16, लेकिन हमको सर्च क्या करना था? B15 ही सर्च करना था. तो फॉर्मूला में क्या चेंजेस होगा? इस फॉर्मूला में वी हैव टू लॉक B15, एब्सोल्यूट रेफरेंस, वी हैव टू लॉक B15. ठीक है. एंटर करता हूँ, वापस अभिलाष आया, वापस अभिलाष आया. ठीक है. अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गया? यहाँ पे भी थोड़ा चेंजेस है. देखो, जैसे ही मैं नीचे आया, A8 से D11 सिलेक्टेड था. वंस आई ड्रैग्ड इट, इट बिकेम A9 टू D12. मतलब A8 चेंज्ड टू A9 एंड D11 चेंज्ड टू D12. सो आई डोंट वांट टू डू दैट. आई वांट टू कीप दैट एंटायर array fixed or entire table fixed. Same, I will just lock the table. I'll just lock the table and drag. अच्छा, फिर भी आंसर सेम है. क्या प्रॉब्लम है भाई? अच्छा, अभी देखो यहाँ पे what answer it is taking. Name answer is taking from the second column, but father answer should come from the third column. So what change I have to make? I have to make this change. I have to make this change and come up with 3. I have to make this change and come up with answer 4th number index. Got it? तो अभी जैसे ही मैं यहाँ पे चेंज करूँ 2 9 2 7 6, मैं जैसे ही चेंज करूँगा, यू सी अविनाश, बब्बर एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. These 3 things have come. Are you clear about how VLOOKUP is used? अब एक एरर में बता रहा था VLOOKUP का कि मान लो द डेटा दैट वी आर सर्चिंग इज़ नॉट इन द फर्स्ट रो, तब क्या होगा? आंसर आएगा नहीं. जस्ट चेक VLOOKUP I want to look up this value. I want to look up this value in this particular table. I want an answer from column number 1 because उसका नाम चाहिए मुझे. तो I want an answer from column number 1 and I want an absolute means answer. When you press, it will not show. It will not show. लेकिन अगर यहीं पे मैं अभिलाष लिख दूँ, देन इट विल शो. क्या शो कर रहा है? मैं पहला वाला ही कॉलम उठा रहा है. मान लो उसके पापा का नाम चाहिए, तो नमन आ गया. गॉट इट? क्या एरर आता है? सो दिस इज़ VLOOKUP. नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट VLOOKUP तो नहीं, वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इन एक्सेल. सपोज अभी यहाँ पे 100 नंबर होता, अब मैनुअली जाके सब नंबर को टाइप करना पॉसिबल होता क्या? नहीं होता. सो विल यूज़ वन मोर थिंग विच इज़ कॉल्ड एज डेटा वैलिडेशन. क्या कहते हैं? डेटा वैलिडेशन. विल यूज़ दिस. एंड व्हाट इज़ डेटा वैलिडेशन? देखो, इफ़ आई टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एंट्रीज, यहाँ क्या करूँगा? I'll click on the cell in which I want a list. I'll go to data. I go to data. Here data validation is there. So what do I want? I want a list from a particular range. What is the range? The range is this. I selected the range. I'll press OK. So I want a list from this range, and I click on save. Now see you will have a drop down option here. Click on this drop down option. Change the number, your answers will change accordingly. देख रहे हो? Your answers will change accordingly. इसको कहते हैं डेटा वैलिडेशन. यूज़ करके you can have drop down list. Is it clear till here? Guys, is it clear? VLOOKUP. VLOOKUP, vertical lookup. People get confused in VLOOKUP and HLOOKUP. VLOOKUP is used for vertical
where your queries are arranged in different vertical columns. HLOOKUP is used in horizontal. इसका just opposite. Let's look at HLOOKUP function. HLOOKUP function में रोल नंबर इस तरीके से है, मतलब डेटा हॉरिजॉन्टल रोज कॉलम्स में, हॉरिजॉन्टली सारे डेटा हैं, उसमें क्या था, रोल नंबर के नीचे नीचे सारे रोल नंबर्स थे. तो इस तरीके के केस में हम लोग वी विल यूज़ HLOOKUP. व्हाट वी विल यूज़ HLOOKUP. द फॉर्मूला इज सेम. व्हाट डू यू वांट टू लुक अप? वी लुक अप, लेट मी डू इट हियर अगेन. व्हाट डू आई वांट टू लुक अप? I want to look up this value. Where do you want to look up? I want to look up in this total table. What do you want as an answer? I want an answer from this second row. इस टेबल के सेकेंड रो से मुझे आंसर चाहिए. तो I'll press 2. I'll have 0. अक्षित, ठीक है. So if I change this number, I will have different answer. HLOOKUP formula easy. Same formula. What do you want to search? Where do you want to search? And what do you want to display? Write the index number. Now there is one more thing. VLOOKUP, HLOOKUP. Okay. So let us say there is data. इस तरीके से डेटा जो है ना, we have vertically all the data we have vertically. Now I want to copy and paste this data here, but I want this data to be pasted vertically, horizontally. I want the numbers to come 1 2 3. इस तरीके से मैं चाहता हूँ वो डेटा, जो भी डेटा है, तब कैसे कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे. Click this entire, click on copy, right click on the cell where you want to paste. Here you will have an option of paste spatial, and under paste spatial you will have an option called as transposed. क्या किया? I copied this cell, I right clicked on the place where I want to paste it, I went to paste spatial, and then I go to transpose. तो जैसे मैं ट्रांसपोज करूँगा ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टली अरेंज हो जाएगा. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कुछ और चीज़ देखते हैं ऊपर टेबल से, यहाँ रिबन से क्या क्या है ऊपर फीचर्स. जैसे सपोज आई एम राइटिंग डॉलर हियर, I had formatted it to bold, I had underlined italics, and I had given a color called as something like this. Now I want this entire thing to be, or entire this formatting also to be shown up here. तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा. यहाँ मुझे एक पेंट फॉर्मेट का ऑप्शन है, लाइक अ पेंट ब्रश रोलर. यू हैव एन ऑप्शन, यू क्लिक ऑन दिस वंस, come to the cell where you want to paste the formatting, click on it, it will be formatted in the same way. क्या किया? I want this formatting to be pasted here, so I clicked on this, I clicked on paint format, I came to this cell, I pressed or clicked on the cell. Now the formatting has been changed. Clear है? This is format painter, this is zoom, this is currency, this is percentage. What are these two used for? I will just tell you. 121.07659438. सब इस तरीके से एक नंबर है. एक तो अमेजिंग चीज़ पहले ये देखो, इन गूगल एक्सेल या शीट दोनों में यू विल हैव नंबर्स अलाइंड टू द राइट ऑफ द सेल. मैं सपोज कोई नंबर टाइप कर रहा हूँ, यू सी इट गेट्स अलाइंड टू द राइट ऑफ द सेल. इफ़ आई एम टाइपिंग अ टेक्स्ट, इट गेट्स अलाइंड टू द लेफ्ट ऑफ द सेल. दिख रहा है? एनी टेक्स्ट गेट्स अलाइंड टू द लेफ्ट ऑफ द सेल, एनी नंबर गेट्स अलाइंड टू द राइट ऑफ द सेल. सो दैट वाज वन थिंग. नाउ व्हाट हैपन्स विद दीज टू ऑप्शंस? दिस विल डिक्रीज द डेसिमल प्लेस. मतलब देखो, लास्ट इज 944. सी इट इज गेटिंग राउंडेड अप एंड गेटिंग डिक्रीज्ड. क्या हो रहा है? इट इज गेटिंग राउंडेड अप एंड गेटिंग decreased. So what will happen with this? It will increase the decimal number. See,
it is increasing the decimal number. Got it? Now this is a number format. How do you want to format these numbers? Now most of you, if anyone is logged in from their laptop, if you type a date something like this, 22/5/2022, in most of your cases it will get aligned to the left, not to the right. In my case, it will not get aligned to the right, it will get aligned to the left because of the date format in your system. That you might have to change. You have to come to file, come to settings. Here local you have to use United Kingdom, and the display language you have to change it to English United Kingdom. This display language you have to change. In most of the cases this display language will be United States and this would be United States, and in United States or places abroad you will have calendar like this. Means first they write the month, then they write the date, and then they write the year. This is the format. Like in our case, if I write in this format, it is not getting aligned to the right, it is getting aligned to the left. That means it is considering it to be as a text and not a date. But when we type like this, it is considering it to be a date. Guys, got clarity? Otherwise खोजते रहोगे कि क्या हुआ, क्यों date is not taking up. Clear यहाँ तक? Any doubts? This is font size, bold, italic, strikeout. This is text color. This is fill color. Fill color cell का color होता है. Fill color cell का color होता है. और ये text color होता है. This is text color. Right? This is if you want to add borders. Suppose I want to add border to this. I'll click on this. This is all side border. This is just inner borders, just horizontal borders. So different options are there. Let us click on all borders, so you have an all border type of thing. If I want to make this border more thicker, I will have an option here to change the color and change the border thickness also. Here a border thickness. I'm going to change the color. I can change the color of the border as well. Okay. Now what is this? This is merge cell. क्या होता है merge cell बताता हूँ. जैसे example, इस तरीके से काफ़ी डिटेल है. अब मैं इस टोटल के ऊपर ना एक चीज़ लिखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अगर यहाँ लिखूँगा तो इट विल जस्ट रिमेन हियर. आई वांट दिस एंटायर थिंग टू बी, और स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट एडमिशन डिटेल. So I want this entire thing to be written above this entire cell. So what I will do, I will click, drag and select this entire cell. Then you can see this merge cell option gets highlighted. अभी देखो मैं अगर सिंगल सेल पे हूँ ये हाईलाइटेड नहीं है, बट वंस आई डू दिस, आई सिलेक्ट मल्टीपल सेल्स, it gets highlighted, and once I click on this, now you can see this cell is not divided anymore. It has just become one single cell. Then I will click on this alignment. I will take it horizontal alignment. Now it is done. Now it will look good. That is the idea. समझ में आया? Merge का क्या काम है? It will merge cells into all the different cells into one cell. अभी you can unmerge it also. Click on it, unmerge, so it becomes unmerged. Simple. वो जहाँ तक आ गया, the cell has become unmerged. That's one thing. Vertical alignment. This is for alignment. This is text rotation. Let's say I want this text to be written vertically, so I can do this. Got it? Across, straight, कैसे भी. Insert comments we have seen. This will help you insert chart. This is for filter, and this is for functions. अच्छा, filter का थोड़ा देख लेते हैं.
मान लो अभी हमको डेजिग्नेशन के हिसाब से कंपनी में फ़िल्टर करना है कौन कौन है, क्या करना है डेजिग्नेशन के हिसाब से. लेट अस जस्ट फाइंड आउट हु ऑल आर इंटर्न इन द कंपनी. सो व्हाट वी विल डू, विल क्लिक ऑन दिस, प्रेस ऑन फिल्टर. फिल्टर डालते ही यहाँ पे देखो एक फनल जैसा आ गया. नाउ क्लिक ऑन दिस. क्या किया हम लोगों ने सिलेक्ट किया और फिल्टर डाला तो एक कॉलम जैसा इस तरीके से फनल जैसा आ जाएगा. नाउ क्लिक ऑन दिस एंड जस्ट क्लिक ऑन इंटर्न. सो व्हाट विल हैपन, ओनली पीपल दोज हु आर इंटर्न विल शो अप. ये समझ में आया किस तरीके से फिल्टर काम करता है. गाइस क्लियर है? This is how you will be using filters. अब मान लो इसको हमको सॉर्ट करना है. सॉर्ट बाय सपोज एक नंबर से सेट ऑफ नंबर से उसके ऊपर में कॉलम में ऊपर सेल में यू क्लिक ऑन दैट, क्लिक ऑन फिल्टर. नाउ यू वांट टू sort it from smaller to bigger, so you can do that, or from bigger to smaller you can do that as well. So that is how you can sort numbers in Google Sheet. With that we have covered almost most of the things. Last few things are there. Two more functions we'll see. One is index and the other one is match. Till now anyone is having any question? No questions? Okay. इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, इंडेक्स फंक्शन बेस्ड ऑन अ गिवन रो नंबर या कॉलम नंबर इट विल गिव यू द आंसर. क्या बोल रहा हूँ, सपोज दिस इज द डेटा, दिस इज द डेटा दैट वी हैव, दिस इज द डेटा वी हैव. ठीक है, आई एम आस्किंग हिम टू गिव मी एन आंसर बेस्ड ऑन रो नंबर 2. रो नंबर 2 में इसमें व्हाट इज, जैसे ये रो नंबर 2 है, इस एंटायर डेटा में कंप्यूटर से लेकर कीबोर्ड तक में इंडिविजुअल अगर हम लोग इस रो के बारे में बात, इस कॉलम के बारे में बात करें तो रो नंबर 2 में आंसर क्या है, माउस है. सो इंडेक्स फंक्शन विल हेल्प यू गेट दैट आंसर. इंडिविजुअली हो सकता है, मतलब आइदर कॉलम वाइज और आइदर रो वाइज, और इट कैन बी अ मिक्स ऑफ रो एंड कॉलम. मतलब 2 डायमेंशनल चेकिंग भी करके वो आंसर दे सकता है. जैसे कि एग्जांपल for row number 2 is what, row number 2 is, this is row number 2 in this data set. 4 से 7 के बीच में रो नंबर 2 ये है. कॉलम नंबर 2 क्या है, कॉलम नंबर 2 ये है. तो इस दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, रो नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 2 इज इंटरसेक्टिंग एट MO2022. सो इट इज गिविंग मी दैट आंसर. नाउ ओनली फॉर रो नंबर in this particular data, row number 2 is mouse, so it is giving me answer mouse. Now if I am considering this entire data, means computer com 2022122900 and this, I had given this as instruction, and in this data I want column number 3 का जो भी वैल्यू है you show it to me. So column number 3 का क्या है, 1 2 and 3. So column number 3 का आंसर 12,900, that is what it is showing to me. अब कैसे फॉर्मूला बनाना है इंडेक्स, बड़ा सिंपल है. यू फर्स्ट टाइप इंडेक्स. अब इंडेक्स जैसे ही क्लिक करोगे, द फर्स्ट थिंग इज, यहाँ देखो रेफरेंस पूछ रहा है, किसको रेफर करना है. तो आई एम सेइंग कि यू रेफर दिस पर्टिकुलर रो, यू ओनली रेफर दिस पर्टिकुलर कॉलम. एंड व्हाट डू आई वांट टू ब्रिंग अ आंसर फ्रॉम, आई वांट एन आंसर फ्रॉम रो नंबर 2. From this particular column I want an answer which is in the row number 2. I'll just close it, I will have the answer. Similarly in this
what we have done, I want an answer. You take this entire section as a reference cell and give me the answer which is present in column number 3. अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला में क्या चेंजेस हुआ है. Once you give a reference, you have to give a row number and then a column number. So I am leaving the row number blank. I am just giving the column number 3. Close it, press enter, you will have the number. Now if you have to do a 2-dimensional check, so 2-dimensional check करने के लिए क्या करना है? Again give the reference range. The reference range is this entire, this time because we are checking it for rows and columns simultaneously. And then the row number is what we are searching. The row number is G6. The row number, let us have the row number as 2. Acha, why I had given G6? I am saying whatever is there in this column, whatever I am writing as input in this column and this column, you take that and give me the answer. Let us say if I take 1, so you see 1 and 2 where they are intersecting. Row number 1 is what? Row number 1 is this. Column number 2 is this. Column number 2 is this. So row number 1 and 2 intersecting at COM2022, it is changing according to it. If I type 3, you see 12099. Row number 1, column number 3. Got it? Index कैसे काम करता है? Match is just opposite of index. Based on a particular result, it will give you the row and the column numbers. Based on a particular result, it will give you, or a value, it will give you the row and column number. ठीक है. जैसे मुझे रो नंबर चाहिए था, मैच फंक्शन यूज़ किया. क्या व्हाट आई वांट टू चेक? I want to check F4, मतलब this value. Where I want to check? I want to check in this entire column. An exact match I want. I pressed enter, so it is at number 6. ऊपर से देखो 149 कहाँ पे है? 1 2 3 4 5 6. So it is at row number 6. Now if I want to check column number, in which column number it is there? So again same formula, but I am selecting the row only. I am not selecting the column. Last time I had selected the column, this time I am selecting the row only. So in this row, what I want to check? I want to check the number 149. Where it is? It is there at column number 3. Clear? Before closing the session, one last thing. अभी मान लो इतना सारा pages हो गया हमारे पास. There are so many different sheets. Now I want all this sheet to be in my first content sheet. So I'll click on the content sheet. Like here you have to link. If I click on this cell reference, so it brings me to cell reference sheet. वैसे ही if I want to have a sheet or a quick link for logical test, so I'll click on this sheet or this cell. I'll click on link, insert link. Now press sheets. देखो यहाँ पे sheets and named ranges. Click on this. I want logical test. Done. So if I click on this, I will be taking to the third number of sheet. It becomes easier to manage the spreadsheet because when you have lot of sheets, you can create a index page and then you can go ahead with that. You can automatically also create index page. For that macros are used. We will be not looking into that presently. Just Google Sheet introduction was there. Hopefully you understood what all features Google Sheet has and some of the basic formulas that you will need as a managers. Any questions? Anybody is having any question? Tomorrow probably we will be having Google Docs and then last class will be Google Drive. Right? No one is having any question? Chalo then, bye. Take care.